गेम डिजाइनर के लिए साइंस चाहिए, गेम डेवलपर के लिए साइंस चाहिए। गेम डिजाइनर में सिर्फ एक ही काम होगा, इररिस्पेक्टिव साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज कुछ भी ले लो, बस 8 से 10 घंटे गेमिंग है मेरे 100 ग्राम पता नहीं क्यों उसका किसी और के काम आएगा। बेकार में मुझे पता नहीं और यस सर। In board examination, there will be no separate filling of NOC. Whatever are your credentials for the first exam, the same will be taken up for the second exam. We'll only, after the first exam, there will be one notification wherein the choices will be taken, how many you want to appear for which category. And subject change will not be allowed. The student appears in all the subjects in first examination. And improvements in science or maths will gain. So what option do you have?